So for Falgun, the price was X. For Veer, it was X plus 30% of X, which is equal to Y. And for Abhiraj, Y minus 20% of Y, which is equal to 11440. So ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे. Y minus 20 into Y upon 100, which is equal to 11440. So 100 will multiply with this Y, so we get 100Y minus 20Y upon 100 is equal to 11440. So we get 80Y upon 100 is equal to 11440. Okay, so then you will get Y is equal to 11440 into 100 upon 80. So 0 and 0 cancelled, or this 0 will cancel. Okay, let this be as 100 only. अभी 8, इससे हमको ये नंबर को 8 से डिवाइड करना है, या 4 से पहले डिवाइड कर लो. 4 इंटू 2, 4 इंटू 25, 2 इंटू 1, 2 इंटू 5, इसका हाफ करना है बेसिकली. 572. Yes or no? So y is equal to 572 into 25. What will be the answer? Tell me after multiplication. Okay, wait, I'll only multiply it. Okay. So this comes out to be 14,300. True. I hope you understand you are in a class. Okay. Has everyone understood till this step? Students, have you understood? Yes, sir. Yes. Sir, how did you get that y minus 20% of y? क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या लिखा है. वीर सोल्ड दिस मशीन टू अभिराज एट अ लॉस ऑफ 20%. तो मतलब वीर का जो प्राइस था उसमें 20% लॉस करके बेचा है. तो वीर का प्राइस अगर वाई है तो उसमें 20% हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. Is this clear? Anyone, if your mic is not on mute and any disturbance comes, I'll remove you from the class. Okay. Has everyone understood how we got the price of y? मतलब y कैसे find out किया, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now y is what? X plus 30% of x. Okay. So x plus 30 into x upon 100 is equal to 14,300. Correct? So again same thing, क्या हो जाएगा? 100x plus 30x upon 100 is equal to 14,300. Okay. So we get 14,300 multiplied by 100 is equal upon 130 is equal to x. समझ में आया ये पार्ट? ये 130 Sir. हो गया. So 130 will come and divide, 100 will go and multiply. So 0 and 0 cancel. 13 into 1, 13 into 11, so 110 हो गया. करेक्ट. अभी 110 into 100 कितना होता है? 11,000. 11,000. So that means फाल्गुन द फर्स्ट पर्सन के लिए प्राइस कितना था उसका? 11,000. समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yatharth, don't try to be funny in the chat, okay? Because everyone can read that chat.
I know it's fun for you all, but don't be funny. Okay? यहाँ पर ध्यान दो आप क्लास में. That's it. Yes, sir. Okay. Sir, can you go to the next slide, please? Has everyone understood the sum? Yes, sir. Sir, हाँ can you बोलो. please show the previous slide? I want a screenshot. Okay. Done. Thank you. Question 16, can you do it as homework? You just need to find out how many percent students failed, okay? 17th question. S is equal to 25% of 60. And 60 is equal to 80% of U. Okay? We have to find value of S plus U. Very basic sum, okay? So 25% of 60 कितना होता है? 15. Divide by 4 करना है. 80% of U is equal to 60. मतलब 80 into U upon 100 is equal to 60. What is the value of U? U is equal to 60 into 100 upon 80. So 0, 0 cancel. 4 into 2. Sorry. 4 into 2, 4 into 15. 2 into 1, 2 into 5. U is equal to 75. Got it? Got it, students? So U is equal Yes, sir. to 25. S is equal to 15. Total is equal to 90. Clear, everyone? Yes, sir. Yes. Okay, now note down. अभी तक homework कितना दिया था मैंने? Do you remember what all questions is given for homework? Yes, sir. हाँ, There's बोलो. like So 16 9. and 9 maybe. 13 and Yeah. 6, 9, 13. 13 and 16. and 16. Okay. Now there are 2, 3 Sir, more sums. Okay. Question number 18 is based on. can you just show the previous slide? Please wait. Just for a second. Please wait. 18. Question number 19 is similar to question 14. So that is also homework. Then you have question number 22. Okay. All this are your homework sums. Please take a screenshot or note it down. Okay. All the sums are easy except for question number 13. So even 20 is very easy. Yes, correct. But we are solving now because some might be new for that sum. Okay. A number is increased by 10% and then it is decreased by 10%. So let the number be 100. Okay. Increase by 10% मतलब 100 plus 10% of 100. कितना होता है? 110. करेक्ट. अभी 110. 10 को हमने 10% डिक्रीज किया मतलब -10% ऑफ Sir, 100. 10. नहीं, 100 नहीं होता है. 110 का 10% होता है. Oh, yeah. Sir, 11 will be 99. 11. So 99. 110 minus 11 which is 99. ओरिजिनल नंबर और इसमें क्या डिफरेंस है? 1. तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? 1% डिक्रीज. 7%. अंडरस्टूड? 100 में से 1% निकालेंगे ऑफ 100 तो 99 मिलेगा.
Sir, can you go to the previous slide for a second? Yes, sir. Thank you. क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, two students appeared for an exam. One of them has scored 9 marks more than the other, and his marks is 56% of the total marks. मतलब दोनों का मिला के sum of their marks. Okay, बोलो. Sir, can you go to the last slide? I wanted to take a screenshot. Okay, sir. So let the first student's marks be x. So second student's marks will be x plus 9. Okay. One of them who has scored 9 marks more than the other, his marks is 56% of the total marks scored by both of them. Okay. So इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x plus 9 मिलेगा. करेक्ट? यस और नो? अभी जिसको 9 मार्क्स ज्यादा मिले, ये वाले स्टूडेंट को, ओके, दिस इज 56% ऑफ दिस. अभी इक्वेशन बनाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा सॉल्व करने. तो इजीएस्ट वे क्या है, सारे ऑप्शंस को ऐड करो. पहले सारे ऑप्शन चेक करो कि डिफरेंस 9 है क्या दोनों नंबर्स में. 30 एंड 39 It's difference 69. of 9 only. I checked. 41 एंड 32 का टोटल 73. 42 एंड 33 का टोटल 75. Last one 77. Okay, now this is the total marks of both the students. जिसको ज्यादा मार्क्स मिला है that is 56% of the total. तो यहाँ पर क्या है, 39. जिसको ज्यादा मार्क्स मिले वो लिख रहे हैं हम. ठीक है, 41 यहाँ पर है, 42 एंड यहाँ है 43. अभी चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. सो सब नंबर्स का या तो 56% निकालो. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम 75 कंसिडर करेंगे बिकॉज इट इज इजियर फॉर कैलकुलेशन. पहला थर्ड ऑप्शन करेंगे चेक. तो 75 इंटू 56 अपॉन 100 करना है. 25 इंटू 3, 25 इंटू 4, 14 इंटू 1, 14 इंटू 4, 13 इंटू 14, 42. Sir, 42 42. आंसर है. मतलब ये दोनों मैच हो रहा है. तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन 3. अंडरस्टूड? Okay, sir. Sarika Deshpande, please be on mute. Please take a screenshot quickly, okay? Done. Last question from this worksheet, which is question number 23. 125% of 750, मतलब 125 into 750 upon 100 plus x into 250 upon 100 is equal to 1000. ओके, तो ये कैलकुलेट करेंगे अभी हम. 0 and 0 cancel. 5 into 2, 5 into 25. या फिर आप क्या कर सकते हो, instead of cancelling out, okay, leave it as it is. Okay, denominator is 100 in both the cases, so you'll write 125. या हम एक 0 0 कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, दोनों में. इज इट ओके? तो नाउ वी हैव 25x upon 10 और यहाँ 125 into 75 upon 10 upon 10 plus 25x upon 10 is equal to 1000. एलसीएम तो नहीं निकालने की जरूरत है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है. तो क्या है, 125 प्लस इंटू 75 प्लस 25x इज इक्वल टू
1000 into 10, which is 10,000. Okay. Is this clear? Yes. अभी इसका जो भी वैल्यू आएगा कितना आता है 125 इंटू 75 9375 plus 25x is equal to 10,000. So we get 25x is equal to 10,000 minus 9375. तो आपको आएगा 625. very good. So 25x is equal to 625. So x is equal to 25. 25. तो आंसर क्या आया हमारा ये x का वैल्यू 25. 25. Understood? Sir, what was the answer of Yes, sir. question 22nd? 20 सेकंड शायद होमवर्क दिया है ना मैंने. Okay, Yes, sir. sir. Yes, sir. Has everyone understood? Sir, can you show the 21st question? Why you are so late? Every time when we complete the next sum, you are on the earlier sum. When I give time to write you this, why don't you write? Has everyone understood this worksheet? Yes, sir. Done, sir. Please take, जिनको भी ये note down करना है, please note it down. Done? We'll do some 3-4 sums of profit and loss and then I'll leave you, okay? We'll not take till 8:30, 8:20 तक हम छोड़ देंगे class. Profit and loss, first question. I hope everyone has the worksheet. A dishonest shopkeeper uses 800 grams instead of 1 kg. His profit is how much percent? They have asked you. Okay. So first consider, मतलब क्या हो रहा है आपको समझ में आया? That let's say he's selling 1 kg of wheat. So to the customers he's showing that it is 1 kg, but actually he's selling how much? 800 grams. समझ में आया? Students, have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, But sir. charging the price for 1 kg only because the people don't know that ये cheating कर. Pani. Nihal, please be on mute. So let the price of 1 kg wheat or anything be 100 rupees. Okay. So for 800 grams, what is the price? Tell me. 80 rupees. Very good. 80 rupees. Now he's selling 800 grams, जिसका cost price है 80. Okay. But he's selling at what price? 100. Correct? Because he's selling at 1 kg's price because people don't know what cheating is doing. So उसका profit कितना हो गया? 20 rupees. Profit is equal to 20. Correct. Very good. This is the last time I'm allowing you students. Please understand, if you disturb in between, I'll remove you from the class. And if you don't understand, don't attend the class. Profit is equal to 20. We have to find profit percent, okay? So profit percent is what? Profit upon cost price into 100. Now what is the cost price? What is Sir, the 100. galat? Cost price for 800 grams is how much? Sir, 80. 80. So you get 20 80. upon 80 into 100. So which is 25%. 25%. Understood everyone?
Sir, but actually 800 gram is 80 rupees, but he's taking 100 rupees. Oh, understood. It's okay, It's sir. selling at 100 ना, उसका कॉस्ट प्राइस तो Yeah, 80 हो yeah, गया. understood, sir. Understood. Understood. Completed, sir. Has everyone finished writing this? Yes, sir. Sir, I had a doubt. हाँ बोलो. Sir, why did we take the CP as 80 here? I mean, the customer was looking at it as 100, right? तो ये तो हम शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना. This whole Okay. thing is according to the shopkeeper, not Okay. the customer. Let's say you are going to the grocery shop and he does this with you. So for you, we are not finding out the profit or loss क्योंकि आपने तो सिर्फ purchase किया, आपने sell कहाँ किया है? It is for the shopkeeper, right? Yes. Question number 2. A shopkeeper purchased 70 kg of potatoes at for total 420. So per kg कितना हो गया? 6 rupees, correct? He sold the whole lot at 6.5 rupees per kg. So this is the cost price. What is the selling price for 1 kg? 6.5. 6.5. Correct. Rupees 6.5. This is the selling price. Profit कितना है? 35 rupees. कहाँ से 35 rupees हुआ? 0.5 हुआ ना? 0.5 rupees. Point. Acha. Okay, sir. 0.5. 0.5. Profit is equal to 0.5. Profit percent is equal to 0.5 So upon cost price into 100. into 100. So here you get. अभी 0.5 into 100 कितना होता है? 50. 50 upon 6. कितना होएगा? 8. 2 by 6. Which 2 by is 6. 8. 1 by 3%. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Done writing, sir. Has everyone finished? Yes, sir. Yes, sir. Sir. In question number 3, it is given a vendor bought 6 toffees, okay, for rupees 1. 1 rupee में 6 toffees. He wants the final profit to be 20%. So profit is given as 20%, okay. How many toffees should he sell for 1 rupee? Now see, this is reverse question. Here the selling price and cost price is same, okay, but number of articles will change. Understood? Yes or no? Yes, sir. अभी आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? You change the cost price. You consider 1 toffee, okay, to be 1 rupee. तो 6 toffees का कितना हो जाएगा? 6 rupees. 6 rupees. 6 rupees, sir. Okay. Now he wants profit of 20%. अभी cost price आपका कितना है? 1 rupee है. Please be on mute. Arnav Akolkar, please be on mute, okay? Sir, I am on mute. आपकी यहाँ से ही आवाज था, अभी मैंने देखा that Zoom doesn't lie, okay? Now the profit is how much? 20%.
So whether the profit is on 6 toffees or 1 toffee, the profit percent remains the same. तो 20% मतलब कितना प्रॉफिट हो गया? टेल मी. सो 1 प्लस, अगर 20% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बताओ मुझे? 0.2. 20% ऑफ 1. अभी 20% ऑफ 1 कितना होता है? 0.2 rupees. 0.2. करेक्ट. तो न्यू सेलिंग प्राइस इज 1.2, मतलब 1 प्लस 0.2. करेक्ट. Yes, sir. ओके. अभी अगर 6 रुपीज में ही आप बेच रहे हो तो 1.2 से आप कितने टॉफीज बेचोगे? 5. 5 टॉफीज. करेक्ट. So how many toffees you should sell so that the profit is 20%? 5. Understood? 5. We just changed this 1 rupee per for 6 toffees to 1 rupee per toffee. Okay. Got it, everyone? Yes, Priya. Sir, but they have told how many for a rupee, but we added 20 paise more, right? नहीं वो तो हमने, देखो क्या हुआ है. सी पे अटेंशन. हमने प्राइस चेंज कर दिया ना. यहाँ एक टॉफी थे और 6 टॉफीज थे 1 रुपी में. हमने क्या किया, एक टॉफी 1 रुपए का कर दिया है. करेक्ट. अभी अगर आप एक Yes, टॉफी का प्राइस यहां से फाइंड आउट करते तो क्या होता? 1/6 होता. अभी 1/6 इज इन डेसिमल. इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू कैलकुलेट. यस और नो? yes, sir. सो व्हाट आई डिड, आई चेंज द प्राइस ऑफ द होल थिंग. अभी जब हम 6 रुपीज में बेच रहे तो 5 टॉफीज बेचेंगे. अभी बस फिर से पहले वाला प्राइस कंसिडर करो. आप समझ में आया? Yes, sir. So it will be the same only. या बिकॉज मल्टीप्लाई बाय 6 किया है तो अभी अगर हम वो फिर से डिवाइड बाय 6 करेंगे टॉफीज तो सेम ही रहेगा. करेक्ट. Yes, sir. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, thank you. Question number 4 is very easy. So that will be for homework. Last question for today is question number 5 now. Okay. If goods are purchased for 1000 rupees and 1/5 of the goods are sold at 20% loss, then at what percent gain should the remaining goods be sold so that the gain is 20% on the whole transaction? तो cost price कितना है आपका? 1000. प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका फाइनल ट्रांजैक्शन होने के बाद? 20%. तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका? 1200. समझ में आ गया? Sir. So, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट. नाउ कंसिडर, अभी 1/5 बोला है तो हम क्या करेंगे, ये कंसिडर करेंगे कि देयर आर 5 आर्टिकल्स इन 1000 रुपीज. ओके. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज हाउ मच? 200 rupees. 200. Very good. Now 1/5 of the goods are sold at 20% loss. तो 1/5 ऑफ 5 कितना होता है? 5 आर्टिकल्स इंटू 1/5 करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 आर्टिकल. करेक्ट. यस और नो? Yes, sir. दिस 1 आर्टिकल इज सोल्ड एट हाउ मच प्राइस? 20% लॉस. अभी कौन से प्राइस पे 20% लॉस हो गया? एक आर्टिकल का प्राइस कितना है? 200. 200. तो मतलब यहाँ पर क्या होगा? 200 माइनस 20% ऑफ 200 कितना होता है? 160. 160. वेरी गुड. करेक्ट.
ओके अंडरस्टूड. दिस इज फॉर द फर्स्ट आर्टिकल. अभी हमें टोटल सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 1200. अभी 1200 में से अगर 160 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा? 1040. बराबर. ये प्राइस कितने आर्टिकल्स का है? 4. 4. वेरी गुड. तो वन आर्टिकल का प्राइस कितना हो गया? 260. वेरी गुड. 260 या 250? हाँ 260 करेक्ट. अभी समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अभी ये जो 4 आर्टिकल्स थे इनमें से सबका प्राइस 200 था. सेलिंग प्राइस इज 260. प्रॉफिट कितना किया है हमने? So 60. 60 rupees. प्रॉफिट इज इक्वल टू वेरी गुड 60 रुपीज ऑन वन आर्टिकल. So 60 into 4, नहीं 240. नहीं रुको रुको रुको. तो अभी हमें क्या करना है? प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है. तो 60 अपॉन 200 200 into multiplied 100. तो क्या आएगा आंसर? 30%. 30. So remaining 4 articles, okay, yeah, whatever remaining good should be sold at what percent? 30% profit. Understood? 30%. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So see here we didn't have how many articles are there, okay? But to make our calculation easy, I took 5 because 1/5 of the goods बोला है तो 5 में से 1/5 निकाला तो 1 article बचेगा. Is this clear? You can even take as 10 articles. तो आपका हर एक आर्टिकल का प्राइस 100 रुपीज होगा. बट द फाइनल आंसर रिमेन्स द सेम. ओके. एंड रिमेंबर profit percent calculated on one article and profit percent calculated on 5 articles. Okay, if it is in the same transaction profit percent remains the same. तो अगर हम ये 5 आर्टिकल्स का फाइंड आउट करते तब भी सेम 30% आता. एक आर्टिकल का फाइंड आउट किया तब भी 30% आ रहा है. समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Please take a screenshot and then we'll end the class. Okay. Well done. Sir, can we leave now? Yes, everyone can leave. So please do the homework sums, and next week we'll complete this chapter's worksheet and we'll start with new chapter. Okay. Okay, sir. Thank you. Bye, sir. Bye everyone. Bye, sir. Thank